I'm Majid Iqbal. I'm student of public administration. So we will discuss about the basic chapters of the accounting. First chapter one is the accounting information for decision making. First we will discuss about the accounting. Accounting is the process which summarizing, analyzing and reporting the financial transactions in a manner that adheres to certain accepted standard formats. So let's discuss about the chapter. The first one is the accounting processes. There are step-by-step processes. There are three steps. The first one is we will collect the information for the decision making. The decision makers will make decision for the economic activities. What is economic activity? Economic activity is all about the money. So we all about the economic activity. So we will earn the money for decisions. So let's discuss about the types of the accounting information. There are three types of basic types of accounting information. The first one is financial accounting, tax accounting, and managerial accounting. Information systems. Three basic information systems: information users, financial information users, decision supported. Then we discuss about the information systems. First one is investors, creditors, and managers, owners or customers, employees, regulators. Financial information supported for the stock investments, tax strategies, labor relations, resources, allocation, lending, decision, and borrowing. A basic function of accounting system is interprets, records the business transactions, then classify the similar transactions into useful reporting, then summarizing and communication the information decision makers. External use of accounting information are owners, creditors, governmental agencies, suppliers, customers. The objective of external financials. The objectives of the external financial reporting are all about the investors, which we get information from the business. Then he will make decision for money. The three basic reportings are balance sheets, income statements, and statements of cash flows. Characteristics of external reported information. Characteristics of external reported information is all about the decision makings. So we will get information from the business, then we will make decisions for getting some good money from business. So it's all about the characteristics of external reported information. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. The managers, the controllers of the accounting information is all board of directors, chief executive officers, vice presidents, etc. And then board of directors are all about the managements that controls the business systems in a good way. It's information. We will get why we will get information, because we will get information to help achieve goals and missions, and then to help educate and provide decision makers. Characteristics of management accounting information. So then first we will get information, then we will interpret. So it's a way we will get the basic goals through the managements that controls all the objectives and resources of the business. So he will apply on these informations and resources, then he will get a good result for decision for the future. Now we will discuss the second chapter of the accounting, the basic financial statement. So we will introduce the financial systems, financial statements. There are three financial statements. First one is
financial. First one is the balance sheet. Second is financial income statement, and third is inflow and outflow of the cash statements. The objective of the financial statement is provide information about financial position, financial performance, and cash flow of an entity. Financial systems. Financial system is also help to the assess the profitability that enterprise. Enterprise will be able to make future cash. So we discuss about the three basic financial statements. Balance sheet. Balance sheet describes where the enterprise stands. Then second one is income statement. Income statements is all about the revenues and expenses. And third one is statement of cash flow. Statement of cash flow is all about the way of cash has changed during the designated. These financial statements are windows to company's performance and health. So basically, first we will discuss about the balance sheet. What is the balance sheet? Balance sheet is that represent a record of company's assets, liabilities, and equities in a particular in times. So balance sheet is named by the fact that the business financial structure balance in the following manners: assets is equal to liabilities plus honor equity. Assets represents debt resources that business owns at a given point in time. This includes items such as cash, inventory, machinery, buildings. Inventory means किसी चीज़ को खरीदना और फिर बेचना, इसको कहते हैं इन्वेंट्री. और मशीनरी ऑल बिल्डिंग्स, जिस तरह हम बिल्डिंग्स कैसे कहेंगे, लैंड, ये आर assets. Then the other side of the equation represented the total value of the financing the company he has used to acquire those assets. Liabilities represents debt. The balance sheet is all about the balance sheet means assets is equal to liabilities minus honor equity. Then we will discuss about the balance sheet. Balance sheet is three basic things like assets, liabilities, equity. Assets में इस तरह कैश आता है, inventory, lands, bridges, equipments, assets. Liabilities are account payable, wages payable, taxes payable, not payable, short term, long term. Equity में stock, common stock, retained earnings. इसके बाद why do we need बैलेंस शीट? हमें बैलेंस शीट की क्या ज़रूरत है? बैलेंस शीट हमें बताती है कि बिजनेस के जो एक पोजीशन है उसको जाहिर कर देती है, क्योंकि बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं वो पहले ही देखते हैं कि इसकी बिजनेस का जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको देखने के लिए फिर बैलेंस शीट देखा जाता है. फिर वो अपने डिसीजन लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह फ्यूचर के लिए मदद मिल सके. Income statement. What is income statement? Income statement is all about revenues and expenses. The income statement shows information about the revenues, expenses, and a profit generated as a result of business operations for that periods, and it measures the company's performance over a specific time frame. The components of income statements are revenues, expenses. Why do we need an income statement? Because income statements answer the questions: how well is the company's business? Does it performing well? Basically, the question is making money. From firms with the low expenses, high profit related to the revenues are typically more desirable investments because it brings more money directly to shareholder. So, the statement of cash flows. What is the best statement of cash flow? So, we will discuss about the third basic statements of financial statements. So, the statement of cash flow. The statement of cash flow represents a record of business cash inflows and outflows period of time.
It's have three basic components. First one is operating cash flow, and then second is cash from investing. Then third one is cash from financing. So cash generated from day-to-day business operations. First one we discuss about operating cash flow. Cash generated from day-to-day business operation. Then second one is cash from investing. Cash used to invest in assets as well as the proceeds from the sale of other business equipments and long-term assets. Cash from financing. The third one is cash from financing. Cash paid are received from the issuing and borrowing funds. Why do we need a statement of cash flow? The basic the statement of the cash flow. Statement of cash flow is very important to investors because it shows how much actual cash a company has generated. Then it shows the ability of firms to generate cash. Many companies have shown profits on the income statements but struggle later because of insufficient cash flows. Because the income statement includes non-cash revenues or expenses, which is a statement of cash flows includes. And third one is show correct figures of firms because cash flows statements is very difficult for business to manipulate its cash situation. Earning can be manipulated, but it's tough for fake cash in the banks. So we will discuss all the financial statements. First one is balance sheet, then is income statement, and third one is cash flow. The first one is balance sheet. Balance sheet tells the basic position of the business. Then third one is income statement. Income statement tells about the business expenses and revenues. And third one is also about the cash, debt inflows or outflows. Then we move forward and we will discuss about the accounting principles. Certain accounting principles are important for understanding the financial statements and how professional judgments by accountants may affect the applications of those principles are shown in the next slides. The concept of the business entity. The first basic way of business entity is the business entity is separate from the personal affair of its owner. It means जो आपके अकाउंट है बैंक्स में वो आपका पर्सनल अकाउंट अलग होगा और बिजनेस अकाउंट अलग होगा. हम अपना जो पर्सनल जो पैसे हैं वो बिजनेस के अंदर मतलब उसको शामिल नहीं कर सकते. ये एक प्रिंसिपल है जिससे हमें आगे मदद मिल सकती है. इसके बाद है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि हाँ अगर एक चीज़ हमने लैंड खरीदी है कोई एसेट खरीदा है जो हमने एक्चुअल रेट हमने जिस रेट से हमने खरीदा है वो आने वाले वक्त में वही रेट होगा चाहे वो उस ज़मीन की या एसेट की वैल्यूएशन बढ़ जाए. और सेकंड वन इज गोइंग कंसर्न. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका हमें ये सोचना होगा कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए होगा. मतलब आगे लॉन्ग टर्म होगा. आप ये सोचेंगे कि ये बिजनेस बिल्कुल चलता रहेगा लाइफ टाइम. और थर्ड वन इज स्टेबल डॉलर एब्जॉर्प्शन. डॉलर is a currency which have valuation for sometimes and then sometimes devaluation. So the problem for the business is devaluation and evolution. So the business show that the dollar is stable. Business assume that the dollar is stable. So stable. Then fourth one is objectivity principle. So we will discuss about
Objective principle states that the accounting information must be unbiased and based upon independent evidence. इसमें जो accounting के अंदर unbiased नहीं होनी चाहिए और जो based independent evidence होनी चाहिए. इसके बाद हमें आगे जाके डिस्कस करेंगे बहुत से ट्रांजेक्शन के. ट्रांजेक्शन मतलब ये है कि एसेट्स बढ़ने से लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी में क्या फर्क क्या इफेक्ट होगा, या लाइबिलिटीज बढ़ने से या ऑनर इक्विटी में क्या फ़र्क होगा. यह अभी मैं आपको स्क्रीन में देखा जा सकता है कि बहुत से हमने ट्रांजेक्शन किए. इसमें कभी हमने एसेट्स को बढ़ाया और लाइबिलिटीज पे किस तरह इफेक्ट है वो हमने आपको शोन की दिखाया है. सो आगे जाते हैं, डिस्कस करते हैं आगे. सो इसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन हमने किए हुए आप स्क्रीन में देख सकते हैं. सो आगे हम पढ़ेंगे there are forms of business organization. There are three basic form of business organization. First one is solo partnership, then is partnership, and then a corporation. Solo means एक बंदा हैंडल कर सकता है कि कोई एक बिजनेस को. पार्टनरशिप में दो से तीन से ज़्यादा कोई बंदा बिजनेस को ओन कर सकते हैं. कॉर्पोरेशन में बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो अपने लिए खरीदते हैं, ज़्यादा अपने कंट्रोल करते हैं. फॉर्म ऑफ बिजनेस. फर्स्ट मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इज द sole proprietorship and corporation is a corporations. So it's all about detail about the form of organization. First one is solo. The unique cooperative business owned by a single person is separated from others of its owners. It's common for small firms, services, business, and large. It's all about the small business, just like a shop. So someone's own a single shop for the business. Then second is partnership. There is owners or co-owners. जो एक ओनर होता है, एक को ओनर होता है, जो दोनों साथ मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं. और कॉर्पोरेशन होते हैं. इसमें इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेट ऑर्गेनाइज अंडर द लॉ एज डिफरेंटली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. सो हमने पढ़ लिया अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट्स, स्प्रेड फ्लेक्सिबल entity from owner management and transformative ownerships. So reporting ownership equity is the determinant of financial positions. It's all about it's all about chapter 2. That's all. Thank you. Now we will discuss the third chapter of the accounting, basic accounting. So the chapter name is accounting cycle. Accounting. What is accounting cycle? Accounting cycle is the sequence of accounting procedures used to classification and summarize the scientific information. The steps of accounting cycle. There are many steps. The first one is the general, and the second one is general ledger. The third one is trial balance. The fourth one is adjusting entries. The fifth one is adjusting trial balance. The last one is financial statement. The role of accounting records. जो the role है accounting का roles है, इसमें बहुत से हैं. इसमें है accountability, keep track of the routine business activities, obtain detailed information about the particular informations, and to know the performance of business, and maintain the documented evidence or company business activities. There are two basic concepts. First one is debit and second one is credit. The amount was recorded on the left side of the account is called debit, and the amount which is recorded in the right side of the account is called credit. So
The recipients are recording is debit side is called debit, and the payment is recorded in the on the credit side. This means is credit. So double entry accounting. The name double entry means the net effect is same for the debit and credit is in accounting. So every transaction is recorded but equal the amount of debit credits. It means no net effects. If a debit increase, then credit is also increase. So thirdly, the reason is for this slide is the relationship of the debit and credit loans in equations. So we will later we will discuss about the equations of balance sheets. So the same thing is in that asset is equal to liabilities plus on the liabilities. Both sides have equal effect. First मैंने बताया कि जो both sides हैं नेट इफेक्ट जीरो है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड्स. What is dividends? Dividends is the distribution of assets corporation to its shareholders. ये बिल्कुल लायबिलिटीज़ की तरह है, लेकिन ये लायबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि ये डिक्रीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ की तरह नहीं है क्योंकि इसके बाद है डिविडेंड्स आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यूज इनकम स्टेटमेंट. इसका ये मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट में अगर हम रेवेन्यूज़ को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करते, इसी वजह से ये लायबिलिटीज़ की तरह नहीं है. और इसके बाद ये होता क्या है डिविडेंड्स? डिविडेंड्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स के दरमियान जितना आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको सबकी जो कॉर्पोरेशन है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इसके एक खास तरतीब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू पर किया जाता है. फिर बाद में एक फैसला किया जाता है कि इस बंदे को डिविडेंड दिया जाएगा और एक नोटिफिकेशन मिल जाती है और उसको डिविडेंड मिल जाता है. इससे इफेक्ट ये होगा कि एक्सेप्ट और लायबिलिटीज़ और प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इफेक्ट होगा, लेकिन ये बिल्कुल लायबिलिटीज़ नहीं है. इसके बाद है जर्नल. दिस इज अ सिंपल डबल एंट्री बुक. पहले हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री इज सेम एज डेट कि डे बाय डे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द मेकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर. देन डेबिट क्रेडिट अकाउंट सपोर्ट्स इन द जनरल प्रोसेस इन द लेजर. इन लेजर डेबिट और क्रेडिट है अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, पोस्टेड लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है. इसमें एक मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जनरल लेजर इसका एक सैंपल है. इस तरह इसमें लिखा जाता है डेट है नवंबर 30 में इसमें डिपॉजिट किया हुआ है एजेंसी, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है G10 एंड फॉर डेबिट क्रेडिट. सो ऑल. इसके बाद हम डिस्कस करें लेजर. The accounting system includes a separate record for each item that appears in the financial statements. The record used to keep track of the increase and decrease in the financial systems. Then the item term is the ledger account. इस तरह ये होता है कि हर एक चीज़ का अलग अलग एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको कहते हैं लेजर. क्यों रखा जाता है? फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हमने डिस्कस किया हुआ है. फाइनेंशियल सिस्टम 3 है: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो द कैश. इसके बाद हमें रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स. अब किस तरह रिकॉर्डिंग किया जाता है एसेट्स? अभी अगर हम ये कहेंगे इंक्रीज इन एसेट्स और रिकॉर्डिंग इन द डेबिट साइड. अगर इंक्रीज किया जाता है, रिकॉर्ड इंक्रीज होगा तो किस में कहाँ पर रखा जाएगा? डेबिट साइड में. और डिक्रीज एसेट होगा कहाँ पर रखा जाएगा? क्रेडिट साइड में रखा जाएगा.
پھر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ادھر ایگزامپل ہم نے بتایا ہوا ہے. ایک بندہ ہے جس نے خریدا ہے، جس کا نام احسان ہے. اس نے ایک لینڈ خریدی ہے 30,000 روپے. 30,000 میں اس نے کیا خریدا ہے؟ لینڈ خریدے. لینڈ اگر خریدا ہے تو اس کا جو ایسٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب انکریز ہوگا، لینڈ اس نے خریدا ہے وہ ایسٹ انکریز کیا ہے، تو انکریز کا مطلب کیا ہے؟ انکریز ایسٹ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ. تو اس میں لکھا ہے 30,000 ڈیبٹ لکھا ہے. اگر ڈکریز ان کیش، ہم نے ایک لینڈ خریدی ہے، کیش کم ہو گیا 30,000 کیش کم ہو، ڈکریز ان ایسٹ مینس کریڈٹ. تو اس نے کیا لکھا ہے؟ 30,000. مطلب یہ کہ ڈیبٹ بھی تھا 30,000 اور کریڈٹ بھی تھا 30,000. ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ سیم رہے گا. اس کے بعد ریکارڈنگ آف لائبلٹیز. اب لائبلٹیز کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ انکریز ان لائبلٹیز ریکارڈ آن کریڈٹ سائڈ. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جتنا اگر انکریز کیا جاتا ہے لائبلٹیز کس میں کہاں پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کریڈٹ میں. اور ڈکریز ان لائبلٹیز کہاں پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ ان ڈیبٹ سائڈ. ایگزامپل انکریز ان لائبلٹیز. ایک بندہ ہے اس نے خریدا ہے کریڈٹ. ایک بندہ ہے اس نے خریدا ہے بلڈنگ. کس سے خریدا ہے؟ مسٹر جہان زیب. تو اس نے خریدا ہے جہان زیب نے. اس کا مطلب یہ کہ 40,000 اس نے بلڈنگ خریدا ہے، ڈیبٹ ہو گیا. اور اس کے بعد اس میں کیش کیا ہو گیا؟ کریڈٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے ریکارڈنگ آف آنر ایکویٹی. ریکارڈنگ آف آنر ایکویٹی سیم ایز لائبلٹیز. لائبلٹیز اگر انکریز ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیبٹ ہو جاتی ہے. اگر ڈکریز ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ کریڈٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح we record the honor equity is the same as liabilities. Increase in the honor equity is recorded as a credit side and decrease in the liabilities کا debit side. اس کے بعد ہے نیٹ انکم اینڈ ریٹین ارننگ. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوگا آنر ایکویٹی میں. اس میں دو ہوتے ہیں، ایک نیٹ انکم اینڈ ریٹین ارننگ. نیٹ انکم از اکول ٹو ریونیو ایکسپینس. نیٹ انکم کا مطلب یہ کہ ریونیو اور ایکسپینسز، جتنے ریونیوز ہوں گی اور جتنے ایکسپینسز ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا؟ نیٹ انکم. نیٹ انکم از دا ٹوٹل